Morning, students of 4th standard. Today we start the next topic of lesson number 7, Introduction to PowerPoint. And now we discuss the topic components of MS PowerPoint. So last time we have discussed what is MS PowerPoint and what is the role of PowerPoint. So what is PowerPoint? PowerPoint is a collection of slides which create presentation according to some topic, some organization, based on some organizations, and these are the topic in which we discuss about components of MS PowerPoint window. Now we discuss about components of PowerPoint window. Some components, these components are, one first component of this topic is title bar. Title bar is the main component of the MS PowerPoint window. The title bar, this is a title bar which describe the title of each and every terms. The title bar is located at the top of the PowerPoint window. This is the PowerPoint is located at the top of the window. This is the title bar. What is this? This is a title bar where title is represented on the mid of the title bar, and this is the type of close and close, minimize and maximize button, and this is the quick access toolbar. Here the complete figure of this title bar. This is a quick access toolbar. In this quick access toolbar, you can save, undo, redo, open, etc. use icon, and this describe the title of the MS PowerPoint window. What is the title? Title is presentation 1. The title bar is located at the top of the PowerPoint window. It display the name of the file. It is the name of the file, so that's why it display the name of the file and also the name of the प्रोग्राम. तो बेटा ये क्या करता है कि जो टाइटल बार होता है वो टॉप पे डिस्प्ले होता है. तो आप भी जब अपनी नोटबुक पे कोई भी टॉपिक करने लगते हो तो टाइटल कहाँ लिखते हो? टॉप पे लिखते हो ना. सेम एज कंप्यूटर में भी अगर MS विंडो पे काम करना है, एक्सेल पे काम करना है या पावर पॉइंट पे काम करना है तो टाइटल कहाँ पर होता है? टॉप पर होता है. तो सेम एज इट आल्सो कंटेन द क्विक एक्सेस टूल बार. इसके पास लेफ्ट साइड में क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार है. क्विक का मतलब क्या होता है? जो हमें फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्स करता है किसी चीज़ का. तो क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन आइकन फॉर फ्रीक्वेंटली यूज कमांड. जिस कमांड को आप मतलब बार बार यूज़ करना चाहते तो ये वहाँ पर हमें फैसिलिटी देते हैं. उन कमांड्स को, उन फीचर्स को हम फ्रीक्वेंटली क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिबन. तो ईच टैब डिस्प्ले, देयर इज अ total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There are 10 tabs: home tab, insert tab, design, transfer, transition, animation, and so on. So these tabs have a lots of commands and when we click on any tab, its command will be displayed in this area. This is in this area, and this area is known as ribbon. This area is known as ribbon. When you click on the home tab, all the feature or all the command display in the ribbon which lies in the tab home. The ribbon is located below the title bar. It contains many tabs. Each tab contains many commands arranged in different groups, and each ribbon has a multiple group. This is a clipboard group. This is a clipboard group. This is slide group. This is font group, and this is paragraph group. So these all are groups. Okay, and this is a tab. These all button which is above the ribbon, that is called tabs. Next is file tab. When you click on the file tab, it is located on the left of the ribbon, and when you click on the file tab, this type of menu will be displayed on your screen. And file tab is located on the left side of the ribbon. When you click on the file tab, you see the
backstage view. This is the backstage view of the file tab, and this is the place where you find option of creating. Here you can create, save and print the file, and lots of features you can do, take a printout, etc. Use these all features you can use in the file tab. Next is slides pane. Slide pane is an area where all the thumbnail of the slides will be displayed on the screen. The slides pane is located on the left side of the PowerPoint window. It has two tabs, slides tab and outline tab. Slides tab, all slides are displayed in small view in the slides tab. So on the page number 87, this window will be displayed on computer screen, and this is a slide pane. These are slides, slides thumbnail which is displayed in your slide pane. These gray area is a slide pane. All the slide which you used for your presentation will be displayed in this slides pane. There in the slide tab there are two options, slide pane and outline pane. When you click it, this is a slide pane, and when you click on the outline, then outline will display the all the text you have write in this slide, and outline pane only display the text which you write on your presentation. The slide pane is located on the left side of the PowerPoint window. तो बेटा जो slide pane है वो किस साइड पे डिस्प्ले होता है PowerPoint विंडो के? लेफ्ट साइड पे. इसमें दो टैब्स होते हैं, एक टैब्स होता है स्लाइड्स टैब एंड एक टैब होता है आउटलाइन टैब. अभी मैंने पीछे आपको विंडो शो की है ना, तो उसमें जो स्लाइड टैब है वो क्या करता है, स्मॉल व्यू, जितनी भी हमारी स्लाइड्स हम अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करना चाहते हैं उन सभी का स्मॉल व्यू देते हैं, जिसको हम स्मॉल व्यू को हम थंबनेल भी बोल देते हैं. जैसे हमारी थंब का नील छोटा सा साइज का होता है ना, सेम एज हम उनको थंबनेल भी बोल देते हैं. यू कैन क्लिक ऑन द स्लाइड नंबर इन द स्लाइड्स टैब टू व्यू द स्लाइड. और अगर जितनी स्लाइड्स आप ऐड करते जाओगे उतने ही उनके 1 2 3 नंबर्स आएंगे, और जिस भी नंबर को आप क्लिक करोगे वो स्लाइड पेन में जिस भी नंबर को क्लिक करोगे वही स्लाइड हमारी मेन डॉक्यूमेंट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी. सेकेंड इज आउटलाइन टैब. आउटलाइन टैब में क्या कर होता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट जो हमने अपनी स्लाइड के ऊपर लिखा होता है उसी को डिस्प्ले करता है. ये स्लाइड की लुक हाउ इट डिस्प्ले एट द रनिंग टाइम डजेंट मैटर what is the look of and what is the effect we have applied on our slides. It just describe or display the text मतलब जो भी रिटन मटेरियल होता है, आउटलाइन टैब सिर्फ और सिर्फ उसी को डिस्प्ले करते हैं. यू कैन डायरेक्टली एडिट द टेक्स्ट फ्रॉम हियर. नेक्स्ट इज स्लाइड क्या होता है, सिंगल पेज होता है किसी भी प्रेजेंटेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं. और हर एक स्लाइड क्या होती है, किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है. तो जिस भी द इन्फॉर्मेशन में भी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वो इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में हो सकती है. नेक्स्ट इज प्लेस होल्डर. तो प्लेस होल्डर क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल. तो जहाँ पर आप कोई मटेरियल लिख सकते हो, मतलब ये एरिया हमें दिया गया है कि अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे माउस के साथ तो हम यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं. जैसे मान लो टाइटल दे दिया हमने माई स्कूल, तो स्कूल के बारे में भी बता सकते हैं कि इट हैज़ 90 रूम्स, देयर आर total 90 teachers for teaching, these all teachers are well qualified. So these are the subtitles and my school is a टाइटल. तो जो एरिया हमें लिखने के लिए दिया जाता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर. ए प्लेस होल्डर इज अ बॉक्स विद डॉटेड बॉर्डर प्रेजेंट इन द स्लाइड. तो स्लाइड के ऊपर जो डॉटेड लाइन में एरिया प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं. यू कैन प्लेस टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इनसाइड द प्लेस होल्डर. इट मीन्स कि प्लेस टेक्स्ट मतलब आप लिख सकते हो इसमें. नेक्स्ट इज अ स्टेटस बार. स्टेटस बार जो होता है वो हमारी मेन विंडो के बॉटम में होता है, जो उसके स्टेटस के बारे में बताती है कि कितना डिस्प्ले द नंबर, स्लाइड्स नंबर की कितनी हमने स्लाइड्स बनाई है. जैसे यहाँ पर आपके शो हो रहा है कि यहाँ पर हमने 2 स्लाइड्स बनाई है, 2 of 2, दोनों 2 स्लाइड्स बनाई है, ऑफिस थीम यूज़ की है, और उनमें कौन सा इफेक्ट्स हमने कौन सा बार यूज़ करें, नॉर्मल, व्यू पॉइंट्स, जूम आउट, स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग व्यू. दीज आर डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ द स्लाइड्स. ईच कंटेन 4 व्यू बटन. तो यहाँ पर कितने व्यू बटन्स हैं, 4 व्यू बटन्स हैं. नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर,
एंड रीडिंग एंड व्यू बटन। ईच बटन चेंजेस द व्यू ऑफ द स्लाइड। और जिस तरह से लुक बनी हुई है, जैसे ही आप क्लिक करोगे उसी अकॉर्डिंग ये हमें व्यू देगा। नेक्स्ट इज़ अ नॉर्मल व्यू। अगर नॉर्मल बटन को क्लिक करते हो तो ये नॉर्मली जैसे स्लाइड शो हो रही है इस तरह से ऊपर, तो इसी तरह से शो होगी। अगर आप स्लाइड सॉर्टर को करते हो तो मल्टीपल स्लाइड सेम टाइम पे आपकी डिस्प्ले हो सकती है सीक्वेंस में। रीडिंग व्यू को करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्लाइड का टेक्स्ट शो करेगी जिसमें आप उसको रीड कर सकते हो। एंड स्लाइड शो व्यू मतलब रनिंग मोड में आप उसको रन करोगे। जो जैसे हम मैरिज की वीडियोस देखते हैं ना, तो एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है, तो वो रनिंग मोड होता है। तो हमारी जब आप स्लाइड शो व्यू को क्लिक करोगे तो आपकी स्लाइड पूरा फुल व्यू देगी फुल स्क्रीन के ऊपर। एंड द स्टेटस बार आल्सो कंटेन जूम स्लाइडर। स्टेटस बार में जूम स्लाइडर भी है, तो इसकी हेल्प से आप स्लाइड को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। जूम इन मतलब उसके साइज़ को क्लोजली इंक्रीज़ कर सकते हो, और जूम आउट मतलब उसके साइज़ को रिड्यूस व्यू भी ले सकते हो, यानी कि डिक्रीज़ भी कर सकते हो। यू कैन आल्सो क्लिक ऑन द जूम इन एंड जूम आउट बटन। तो आप इन बटन को भी क्लिक कर सकते हो।